अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, ख़ासकर क्रिश्चियन लोगों के लिए। आज की वीडियो में आप देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कतर में फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से जो नशिस्तें हो रही हैं, वहां पर शो में एक क्रिश्चियन सवाल करता है, 3 सवाल करता है। डॉक्टर साहब तीनों के जवाब दे देते हैं, मुतमईन कर देते हैं। ये सारी की सारी वीडियो इंग्लिश जबान में है, तो आप इस वीडियो को देखें, शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। हर सवाल और जवाब का तर्जुमा भी मैं आपको करके दूंगा इंशाअल्लाह। Wallace, do you believe that there is one God? I believe there is one God. Do you believe Jesus is God? I believe Jesus is a messenger and son of God. Messenger of God, correct. Messenger of God, and he's also the son of Son God. of God meaning messenger, no problem. But he's not God. My Bible tells me that he is the only begotten son of God. And that is But if you read, as I told you, brother Wallace, I told you what you're quoting is from the Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, which says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Now, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by 32 Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations, they say this word begotten is interpolation, is a fabrication. So if you say begotten son, it's a fabrication. If you say son of God, meaning a messenger of God, no problem, brother. So if you believe he's a godly person, we verily believe that Jesus Christ, peace be upon him, was the beloved of God, but he was not God, he was a messenger of God. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्रिश्चियन आदमी से पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं अल्लाह ताला एक हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं? तो इसके जवाब में वो क्रिश्चियन कहता है कि मैं ये तो मानता हूँ कि अल्लाह ताला एक हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर भी हैं और अल्लाह ताला के बेटे भी हैं। तो इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर तो आप सन ऑफ गॉड का मतलब ये ले रहे हैं कि इससे अल्लाह ताला के पैगंबर मुराद हैं, सिर्फ बेटे नहीं, पैदा किए हुए बेटे नहीं, तो फिर तो आपकी बात ठीक है। और अगर इस सन ऑफ गॉड से आप मतलब ये ले रहे हैं कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो फिर आप तो गलत हैं। फिर डॉक्टर साहब उनकी किताब गॉस्पेल ऑफ जोहन से एक हवाला देते हैं, कहते हैं कि जो गॉस्पेल ऑफ जोहन पुरानी किताब है, उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैदा किए हुए बेटे हैं, लेकिन गॉस्पेल ऑफ जोहन का जो नया एडिशन आया है उसमें यह बात नहीं लिखी हुई। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस पुरानी बाइबल के अंदर जो है वो मिलावट की गई है। तो इसलिए आपकी किताबों के अंदर मिलावट है, हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, पैदा किए हुए बेटे नहीं। This is regarding capital punishment. Yes, brother. Of which is illegal in many countries of the modern world. Yes. This capital punishment, for me, if I would be asked, this is murder. And I'd like to know whether you believe that Allah or my God, of whom I worship and I bow down before, he is the only one who has a right to take life, whether of a sinner or whether of a good person. Because I understand, and you earlier mentioned, that it is punishable by death, according to the Holy Quran. The brother said that capital punishment, most of the modern countries, is illegal, but in Islam there are certain capital punishment, and brother rightly said that only Almighty God has the right to punish. That's the reason only those crimes which Almighty God has given permission to kill is allowed. And I gave you an example that if someone commits rape, there is capital punishment. Brother, I'm asking you the question. Someone rapes your mother. Brother, I'm asking you a question. Someone rapes your mother and the rapist is brought in front of you, and if you are made the judge, what punishment will you give him? What will you do? I will kill, because I'm a human being. Oh, kill. Now you are saying capital punishment wrong. When someone rapes your mother, you want to kill the rapist. Why? Double standards. You are a human being, I am a human being. Allah is Almighty God. He has told that certain crimes which are spreading corruption in the world, like raping, should be put to death. I agree with you. I have asked this question to thousands of non-Muslims. 100%, all of them said we will put him to death.
Some went to the extent of saying, I will torture him to death. How you said, I will kill him. Correct. You're a human being, I'm a human being. How dare somebody rape your mother or my mother? I agree with you, brother. This is the law of God because he is spreading corruption. So in this way, brother, there are certain crimes which Quran and the Sharia gives permission as capital punishment. If it is a punishment from God, we agree with it. You and I cannot put anyone to death unless it is permitted by Almighty God. Hope that answers the question, brother. यहाँ तक दो सवाल मुकम्मल हो गए, दोनों के जवाब भी हो गए। तो दूसरा सवाल ये था, क्रिश्चियन आदमी ने कहा कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। फिर वो एक मिसाल देते हैं कि जैसा कि सजाए मौत, कि जब कोई किसी के साथ रेप करता है तो उसको सजाए मौत इस्लाम में दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन ममालिक के अंदर ऐसा नहीं है वहां तो खुशहाल जिंदगी गुजर रही है, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं कि ये सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, बिल फर्ज अल्लाह ना करे आपकी मां से कोई आदमी जिना करे तो उसके आप क्या करेंगे उस आदमी के साथ? तो इसके जवाब में वो गुस्से में आकर कहता है मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वाह, कहते कुछ हो और फिर करते कुछ हो। जब किसी और की बारी आए तो आप कहते हो कि उसको कत्ल नहीं करना चाहिए, और जब आपकी मां या आपकी बहन किसी की या मेरी मां की किसी की बारी आ जाए तो आप कहते हैं कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये तो दोगलापन है। फरमाया कि जो इस्लाम के अंदर जो कानून बने हुए हैं ये हर जगह पर अगर नाफिज हो जाएं तो हर जगह पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और यकसानियत भी आ जाएगी, और इसके साथ साथ हर जगह हर कंट्री के अंदर अमन भी आ जाएगा। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। We all know that Christianity began or commenced since 2000 years ago, as well as Islam commenced about 1400 years ago. Will you be kind enough, sir, to explain to me or to anyone else who may have doubt how you believe about this period since the time of Christ when Muslim started? Do you believe that these people who existed in that time will be judged, or they are going to be the same as us who has come after Islam? The brother asked the question that according to him, Christianity came 2000 years back and Islam came 1400 years back. Brother, you're wrong. Islam did not come 1400 years back. Islam is there since time immemorial. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of the religion of Islam, but he's the last and final messenger. Islam is there right from Adam, peace be upon him. Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. So you have a misconception that Islam came into existence 14 years ago. It's totally wrong. Quran was revealed 14 years back. But Islam is there since time memorial. At the time of Moses, if you followed the teachings of Moses, peace be upon him, you would go to heaven. At the time of Jesus, if you followed the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, you would go to heaven. Today, you have to follow the teachings of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. And that was also meant by Jesus, peace be upon him. As I mentioned in my earlier answer, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. So, brother, at the time of Moses, you have to believe in the teachings of Moses, peace be upon him. At the time of Jesus, if you believe in the teaching of Jesus Christ, peace be upon him, you are following Islam. Moses was the messenger of Islam. Jesus Christ, peace be upon him, was the messenger of Islam. And the last and final messenger was Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that clarifies the question, brother. इसके बाद वो क्रिश्चियन आदमी सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले का मजहब है और क्रिश्चियन ईसाईयत ये 2000 साल पहले का है। तो जो लोग इस्लाम से पहले ईसाई थे या इस्लाम के बाद अब भी ईसाई हैं, क्या उनका हिसाब किताब एक जैसा होगा? तो इसके सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर साहब कहते हैं कि आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, बल्कि इस्लाम बहुत पुराना है। इस्लाम ना ही
1400 سال پہلے کا ہے اور نہ 2000 سال پہلے کا ہے، بلکہ اسلام پہلے آدمی سے شروع ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آدم سے اسلام شروع ہوا، پھر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کی ہی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ہر ایک کی ایک اپنی شریعت ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن کریم ایک آخری کتاب ہے اور قرآن کریم کو 1400 سال ہو رہے ہیں آئے ہوئے، لیکن اسلام کو 1400 سال آئے ہوئے نہیں ہوئے، بلکہ اسلام تو پہلے آدمی سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ Dr. Zakir Naik, please can you tell me whether parts of the Bible of which are speaking the truth, or there are others which are lying, or I don't understand this, please, sir. You asked the question that can you believe the Bible is lying, speaking the truth, etc. We believe that Injil was the Wahi which was revealed to Jesus Christ, peace be upon him. But the present Bible, it is a mixture. It contains part of the Wahi given by Almighty God to Jesus. It also contains the word of the prophet. It even contains word of historian, and I'm sorry to say it even contains pornography. So I do not agree the total Bible to be the word of God. It is a mixture. What matches with the Quran, I've got no objection in agreeing that is the word of God. But the Bible even has got pornography. For example, Ezekiel 23. If you pay me even $1 million to read Ezekiel 23, I cannot read in the public. It's nothing but pornography. Correct, brother? So I do not believe the total Bible is the word of God. The Bible says that Prophet Lut, he did zina, he did incest with his daughter. I cannot believe that a prophet of God can do incest with the daughter. Therefore, everything of the Bible is not the word of God. It is a mixture. It contains the word of God, it contains the word of the prophet, it contains the word of historians, it even contains pornography. آخری سوال وہ کرسچن کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل خدا کے الفاظ نہیں ہیں؟ تو اس کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ بائبل ساری کی ساری خدا کے الفاظ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ بائبل یہ اس وقت جو موجود ہے یہ مکسچر ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ انجیل تھی، وہ انجیل اب نہیں ہے۔ اب جو موجود ہے اس میں کچھ باتیں تو وہی ہیں جو انجیل میں تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں لکھ ڈالی ہیں۔ تو موجودہ زمانے کی بائبل مکسچر ہے، جیسا کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن کیسے ہے ایک نبی اور اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایک غلط کام کرے؟ تو اس لیے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری بائبل جو ہے یہ غلط الفاظ ہیں، خدا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ خدا کے الفاظ ہیں، باقی ساری کی ساری آج کے لوگوں کی بنائی ہوئی مکسچر کتاب ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور میرا ترجمہ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا امید کرتا ہوں وہ بھی پسند آیا ہوگا۔ گائز، آج کی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو میں اسی طرح پیش کروں گا، تو آپ ہماری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔